to be the national chairperson of the Public Awareness Committee. This is something which is, I love this work. And yes, welcome. मैं आप सबका बहुत ही स्वागत करती हूँ. And अभी तक आपने सुना होगा कि we have, topics like osteoporosis, sarcopenia, मतलब हम लोग सब बीमारियों के बारे में बात करते रहते थे. लेकिन now we are talking about sexuality. And I am thankful to the guests today who have joined with us, because Dr. Aarti Gupta Madam, who is the Secretary General of Indian Menopause Society, she has joined. And Dr. Pushpa Madam is probably busy. Dr. Pushpa Shetty Ma'am, who is our President, probably she'll join later. And we have our guests of honor today, Dr. Neeraj Jadhav, who is the chairperson of the Sexual Committee of FOXY. And Neeraj bhai, thanks to you that, you have made this a very common topic which being discussed. Previously, it used to be a taboo topic. लोग शर्माते थे, झिझकते थे, हिचकिचाते थे, even before speaking the word sex. And now it is something which is like, very common thing which is being discussed. And मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि इसमें हमें कोई शर्म और झिझक नहीं रखनी है. Because just like eating and drinking, sexuality is basic to human survival, human origin, right? हमारी जो उत्पत्ति हुई है, जीव उत्पत्ति, वो इसी प्रक्रिया से शुरू हुई है और ये बहुत ही कुदरती, बहुत ही साहजिक प्रक्रिया है. और जैसे लेडीज की हेल्थ आफ्टर 40 इंप्रूव हुई है और हम अपना 1/3 जीवन हम मेनोपॉज में गुजारते हैं. So when we are healthy, when we are happy, what is the problem in enjoying togetherness? और जैसे हम आपको इस वेबिनार के थ्रू ले जाएंगे, तो हमारे आज स्टार स्पीकर्स हैं. आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट. डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा sir is here. Thank you, sir, for joining and obliging us, because you have not only I would say information, but a lot of experience, and you can speak with a lot of conviction, because you really exemplify and how to keep the spark alive after 40. And I'm also thankful to Dr. Sanjay Deshpande from Nagpur, who is another speaker, sexologist, who would be going to speak that how is the sexuality changing, what are the challenges at 40, and how we can overcome them. So first, I would like to request our guests to please give us blessings. Dr. Aarti Gupta Madam, who is the Secretary General, please bless the webinar. Thank you, Beenal. मेरी आवाज आ रही है, Beenal? Yes, madam. Yes, please. Yes. Thank you so much, Beenal, for inviting me. And I am really happy you are taking the public awareness to a great extent, and you are doing regular webinars and all the programs to enhance the public awareness. So it's really a very good thing which you are carrying on. And I will like to thank all the dignitaries who are present here. I will like to welcome Dr. Neeraj Jadhav, Dr. Narendra Malhotra, and there are so many people you have included in this webinar. Thank you so much, Beenal. I think you will carry on like this only. These are my few words for you and for your webinar. Thank you so much, madam. And now I would like to welcome Dr. Neeraj Jadhav, who is a revolutionary in this field and who has really brought a lot of insight to this topic. So over to you, Neeraj bhai. Can we have some words from you? Thank you, Beenal. सबसे पहले I would like to congratulate Beenal for thinking about this topic. मुझे इस प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाने के लिए भी मैं सबको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, स्पेशली डॉक्टर Beenal. And Beenal has rightly said, if you are having some question about the sexual health or any sexual problem, why we should hesitate? Because it is a still taboo topic. People are so much hesitant and they feel embarrassed जब वो पूछना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं about the sexual problem or sexual health. अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो आप खुल के बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो. तो फिर क्यों ना हम सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में भी इसी तरह से खुल के बात कर सके. दिस इज द टाइम, so many things are happening, so many things are changing. So हमें भी अपना माइंडसेट बदलना है कि हम खुल के ओपनली बात कर सके सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में.
और मुझे आप लोगों को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 4 सितंबर जो अभी मंडे को आ रहा है, इट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज ए वर्ल्ड सेक्सुअल हेल्थ डे। इस दिन की शुरुआत ही इसीलिए की गई थी कि हम लोग खुल के बात कर सके अबाउट द सेक्स, अबाउट द सेक्सुअलिटी, अबाउट द सेक्सुअल प्रॉब्लम, हाउ वी कैन एंजॉय आवर सेक्स एंड सेक्सुअलिटी बेटर। सो इस दिन के पूर्व 2-3 दिन पहले ये प्रोग्राम आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। So I congratulate Bilal for thinking about this program, and there are two eminent speakers today, Dr. Sanjay Deshpande and Dr. Narendra Malhotra sir. I know both of them very well. They are excellent speaker. So I'm after 40, how we can enjoy our sexuality after 40. So please ध्यान से सुनिए उनके प्रवचन को, और यू कैन स्प्रेड द मैसेज, उनके सीख के आपके अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। देयर शुड नॉट बी हेजिटेशन, और there should be no shame about discussing this topic. So once again, I thank you, Binal, for inviting me, and I wish every success for this program. Thank you, Binal. Thank you, Neeraj bhai. Yeah, Paresh bhai, do we have Yashodhara madam? Has she joined? Dr. Yashodhara Pradeep ma'am? I am not able to see her. Okay, fine. I am thankful to the societies of menopausal societies of Agra, Calcutta, Lucknow, Nagpur, and Vadodara. Binal, Yashodhara madam. Yeah, Yashodhara madam, can we have few words from you of blessings, madam? Thank you, Binal. This is really a proud privilege to be a part of this venture, the Menopause Society of India, who is organizing a very important topic of sex after 40. This is a very important topic because many of the people do not understand what are the problems we have. Just hold on. Yes. Now the sound will be, disturbance will be less. So it is going to be a very good program, and it really needs the awareness. It is not only, as the WHO has defined, the complete health is a physical, mental, and social. And the social health, sexual health is very important. If you do not practice, then probably sometimes I have seen people are mentally disturbed. So they are very related to each other. It's not only physical, it's not only mental, it's all in association with this. I can see Dr. Neeraj is there, who has brought this society of Sexual Health Committee, Foxy. He is doing really wonders. And I say, Binal, you are the one who is an icon for it. That you are the one who is organizing such nice topics and such nice programs. So my blessings to you, and I'm looking forward and going to listen to these topics also. So thank you so much for inviting me. Thank you so much, ma'am, for your blessings. I'm really obliged. And yes, dear friends, अब और हम आपको wait नहीं करवाएंगे, and आइए सुनते हैं, because sex life after 40, there is much beyond being just physical. You know, मतलब जो emotional intimacy है, जो emotional well-being है, इसके साथ बहुत इसका अच्छा connection है, और हमारे speakers हमें इस बारे में बताएंगे. So over to the MOC, please invite the chairpersons for the first session. Varshabin, please unmute yourself. Just for 1 second, I just interrupt. Today we have also every time we are live on YouTube as well right now. So I have shared the YouTube link also in the 31st August group and the GCM group, because after 100 we'll not be able to take the participants on this Zoom link.
So please share the YouTube link on your society's WhatsApp groups. Respected presidents, please note that. Thank you so much. Varshaben, over to you. After having sought blessings from our guests of honor, we move further to discuss sexuality at menopause. संवाद हिंदी और सरल अंग्रेजी में होगा, for which I invite the chairpersons for the session, Dr. Vidya Sutaune. Welcome to Vadodara, and she is president of IMS Nagpur. Then we have Dr. Nirmala with us. She is president of Menopause Society, Kolkata. So over to you both. Please chair the session and call the speaker. Thank you. Thank you so much, and thank you for giving me this opportunity. And I would like to invite our speaker, Dr. Sanjay Deshpande. And Dr. Sanjay Deshpande is the chairperson, CSTPI. He is the finance director, IMA, MS, and PPS. He's a CWC member, IMA headquarters, the honorary secretary, Indian Anthropos Society. He's past president, IMA of Nagpur, and he's recipient of Golden Lamp Award, CPI, and he's best honorary secretary of IMA at state and national level, best president of IMA at state and national level, and he has had an award, Suresh Nadkarni Mitra Mandal Award for articles on sexual medicine by IMA, Maharashtra, and he's a Sunrise Peace Mission's Yogi Manohar Vaidyakiya Seva Ratna Puraskar he's got. So wonderful to have you with us, Dr. Sanjay Deshpande, and really waiting to hear you. Please, Dr. Sanjay Deshpande. Dr. Sanjay. Please unmute yourself, Dr. Sanjay. Unmute. Okay. So thank you, Sutone madam. We are sharing the same platform today, though we are in Nagpur, but meeting after quite a long time on this platform. At the outset, I must thank Madam Binal Shah and our very good friend Dr. Neeraj for involving me in this very good program, I can say. Because why I am saying that this is a very good program is because it is not only meant for doctors, it is meant for even non-medical friends also. And that is what I am more eager to talk in this program. So thank you very much to the Indian Menopause Society as well as the FOXY and NOGS all. So I will just like to share my screen. So kindly allow me to have this sharing of the screen. Yeah, welcome Dr. Sanjay, and आप language easy रखिएगा, Hindi English mix है सर. Madam. For benefit of everybody, we want to reach to more larger audiences. Yes, definitely. Thank you so much. तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि हम लोग नागपुर के और हिंदी में बात करना हमें आता है, क्योंकि नागपुर ऐसा है कि नागपुर वाज द कैपिटल ऑफ सेंट्रल प्रोविंस बिफोर इंडिपेंडेंस और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. इनफैक्ट नागपुर ऐसी एक बदनसीब शहर है कि जो स्वतंत्रता के बाद में एक राजधानी नहीं लेकिन उपराजधानी रह गया है. उसका थोड़ा दुख हमको रहता है, और उसका फायदा यह है कि मध्य प्रदेश और सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी होने के कारण हम लोग हिंदी अच्छा बोल लेते हैं. इतना अच्छा भी नहीं जो यूपी एमपी के जो चेस्ट हिंदी बोलते उतना नहीं होगा. Sir, there is a request in the chat box that it should be not pure, very tough Hindi. Please use words as well. आता ही नहीं है मैडम, इतना चेस्ट हिंदी मुझे आता ही नहीं है. थोड़ा अंग्रेजी हिंदी ऐसा दोनों मिक्सर रहेगा. परफेक्ट. बिल्कुल. तो काइंडली बेयर विद मी दैट. मैं इसीलिए बोलने वाला था कि जैसे यूपी एमपी वालों जैसा हिंदी एकदम अच्छा नहीं बोल पाते, पर हिंदी को मराठी को हिंदी ट्रांसलेट करके हम बोल लेते हैं. बट विषय बड़ा सिंपल और सादा है. एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूं कि मिड लाइफ सेक्सुअलिटी या अपनी जो अधेड़ उम्र में हम लोग जब पहुंच जाते हैं, मराठी में उसको हम बोलते हैं 40, आफ्टर द एज ऑफ 40, उसके बाद में हमारे काफी रोल्स बदल जाते हैं. तो 25-30 साल की उम्र में एक हस्बैंड वाइफ या एक प्रेमी प्रेमिका का जो रोल रहता है वो खत्म होके जब आदमी संसार में
आ जाता है तो बोला जाता है ना कि हस्बैंड होने के पहले लवर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद जब वो हस्बैंड बन जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और सेम होता है लेडीज लोगों के बारे में भी, कि जब प्रेमिका रहती बड़ी प्यारी लगती है, और जब संसार में आ जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, जब पत्नी बन जाती है, और जब जो खरा खोटा सुनाती है, क्योंकि वो पत्नी होती है, तब रोल बदल जाते हैं। तो ये बदले हुए रोल के साथ में हमने हमारा जो प्रेम भाव है वो कैसा रखना चाहिए, इसके ऊपर ही मैं आज बोलने वाला हूं। मुझे मालूम है, मैं जितना भी कुछ बोलने वाला हूं हम सबको मालूम है, इवन डॉक्टर्स नहीं, इवन नॉन डॉक्टर्स भी आज जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, सब लोगों को पता है ये क्या करना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सेंसिटाइज करना है। आपको पता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम 40-50 साल की उम्र के हो जाते हैं, हमें लगभग सभी चीजें पता रहती है कि ऐसा करना चाहिए, पर हम हमारे संसार में चलते हुए अपने स्वभाव के अनुरूप उसको जान नहीं पाते या उसके हिसाब से बर्ताव नहीं कर पाते। तो किसी ने कभी उसको अगर हाईलाइट कर दिया तो हमें ध्यान आता है और हम फिर से वैसा बर्ताव शुरू करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये छोटा सा अटेम्प्ट है कि कुछ सिखाना नहीं चाहता हूं, बट आपके साथ मेरे कुछ जो विचार है, पिछले 20-25 साल से मैं सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ चर्चा करते हुए मुझे जो समझ में आता है, कोई किताब से नहीं, बट ये मेरे पूरे अनुभव में आपके साथ शेयर करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग माय थॉट्स ऑन मिड लाइफ सेक्सुअलिटी। हम लोग अगर मर्द की आयु देखे, उसका पूरा जीवन देखे, तो पहले 25-30 साल तो उसके पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, फिर पैसा कमाना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं कमाएगा, गाड़ी घोड़ा घर नौकर चाकर नहीं रहेंगे, तब अच्छी बीबी भी नहीं मिलती। क्योंकि ये यथार्थ है, रियलिटी है कि आदमी, अगर उसे बोला जाता है कि कोई भी बाप या कोई भी लड़की किसी से ब्याह करना चाहती है, तो ऐसा होता है कि इसको मेटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, कि मैं ये पुरुष के साथ में शादी करूंगी, उसके बाद मुझे जो लड़का लड़की जो भी होंगे उनका लालन पोषण कैसा कर पाएगा, ये देख के ही जनरली शादियां होती है। शादियां बड़ी रियलिस्टिक बातें होती है, इसलिए प्रेम और शादी में काफी अंतर पड़ता है। तो 30-35 साल की उम्र में ये मर्द कमाना वगैरह शुरू करता है, 30 साल की उम्र में शादी होती है, खुद का व्यवसाय, खुद की प्रैक्टिस या खुद की नौकरी। अराउंड 40 साल की उम्र में वो थोड़ा सुस्थिति में आ जाता है, थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। पर अच्छी पोजीशन में आने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनका शिक्षण शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ में फिर उनको भी कैसा एस्टेब्लिश करो, उनको भी कैसा सेटल करो, जबकि लड़के की शादी लड़की की शादी नहीं होती है, तब तक ये चलते रहता है। यानी 50-60 साल की उम्र में भी, जो पुराने जमाने में बोलते थे कि 40-50 साल की उम्र हो गई कि हमें हमारा आराम करने का अभी समय आया है, वैसा अभी नहीं है। हम लोग 60-70 साल तक के, और डॉक्टर लोगों के तो इसमें और 10 साल आप जोड़ लीजिए हमारा लाइफ शुरू होने के लिए। तो ये परिस्थिति मर्दों की होती है, सेम औरतों का भी होता है, लेकिन औरतों में थोड़ा सा बदल होता है। अब मैं ये जनरली हम लोग जो वर्किंग कंडीशंस में, जैसे आप सब लोग गायनेकोलॉजिस्ट है, आप काम करती हो, ये आपके लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन जो भी औरतें हाउस वाइफ्स है या वर्किंग वुमेन नहीं है, उनके लिए ज्यादातर ये लागू होता है कि शादी के पहले, जन्म के बाद पहले 25 साल तक, जब तक शादी होती नहीं तब तक माँ बाप के कंट्रोल में रहती है। फिर 40 साल की उम्र में अगले 15 साल एक तो हस्बैंड के कंट्रोल में, या अपने सास ससुर के कंट्रोल में, ससुराल वालों के कंट्रोल में, और बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों की परवरिश करने में। यानी 40 साल की उम्र तक तो ये औरत, एक साधारण हिंदुस्तानी औरत, उसको 40 साल तक तो सेक्स पता ही नहीं रहता है। शादी के बाद बच्चे होना चाहिए, इसलिए वो स्त्री शारीरिक संबंध के लिए तैयार होती है, उसमें सहभागी भी होती है, काफी लोगों को उसमें आनंद भी मिलता है। पर खुद की जिसकी जो उसको ओन सेक्सुअलिटी उसकी हम जो बोलते हैं वो डेवलप होती है, वो लगभग 40 साल की उम्र के बाद में, क्योंकि तब कहां वो ये ककून से बाहर निकलती है और एक औरत करके खुद का जीवन जीने का प्रारंभ करती है।
तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइफ रियली डज बिगिन एट 40. अप अंटिल देन यू आर जस्ट डूइंग रिसर्च. तो 40 साल की उम्र में औरतें भी और मर्द थोड़ा और लेट सीखते हैं, मुझे लगता है 45-50 साल की उम्र में. तब उन्हें लगता है कि नाउ हम भी एक मर्द और एक औरत करके जीना चाहिए, हस्बैंड वाइफ करके जीना चाहिए. बट उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है, बदलाव होती है, उसको अपन देख नहीं पाते. तो क्या होता है, एक 40 साल की उम्र में साधारण जो भी कपल है उसको अगर हम देखें तो 40 साल की उम्र में हमारे लिए ना मियाँ बीबी या वाइफ हस्बैंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम 2 लड़कों के या 3 लड़कों के या 1 लड़कों के माँ बाप रहते हैं. हम लोग पेरेंट्स ज्यादा रहते हैं. और पति पत्नी या रोमांटिक लवर जिसको हम बोलते हैं, जो होना चाहिए. एवरी पर्सन आफ्टर मैरिज शुड बी अ रोमांटिक पर्सन, अ सेक्सुअल पर्सन, अ लविंग पर्सन टुवर्ड्स हिज वाइफ और टुवर्ड्स हिज हर हस्बैंड. बट ये नहीं होता है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके शिक्षण शुरू हुआ है, तो वो अपने पार्टनर से या स्पाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. चाइल्ड केयर इज टेकिंग ओवर स्पाउसल रिलेशनशिप. तो पेरेंट वर्सेस लवर ये रोल में हम आ जाते हैं. तो बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट हमारा कहना रहता है कि पेरेंट तो हमेशा हम बोलते हैं, मेरे माँ बाप भी बोलते थे, मैं भी मेरे बच्चों को बोलता हूं कि पेरेंट ये ऐसा रोल है कि एक बार तुम पेरेंट बन गए कि जिंदगी भर वो रोल से बाहर नहीं निकल सकते. टिल द डेथ ऑफ दैट पेरेंट ही और शी कैनॉट कम आउट ऑफ द रोल ऑफ अ पेरेंट. सो पेरेंट इज फॉर एवर. तो मुझे वो लगता है वो कंसेप्ट पेरेंट इज फॉर एवर जैसा है, वैसा लवर फॉर एवर भी होना चाहिए कि हम अपने पति पत्नी जब तक जीवित है तब तक एक दूसरे से प्यार करना चाहिए. और प्यार में सेक्स भी आता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दुनिया में सिर्फ एक इकलौता रिलेशन है जहां सेक्स इज इंपॉर्टेंट. सेक्स का अंतर्भाव है उसमें. बाकी सब रिश्तों में नॉन सेक्सुअल रिलेशन है, माँ बाप भाई बहन ये सब रिलेशन अपने नॉन सेक्सुअल है. देयर इज ओनली वन कंप्लीट रिलेशनशिप एंड दैट इज अ मैरिड पार्टनरशिप. और सेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेक्स में ऐसा है, आइदर यूज इट और लूज इट. और एखादा व्यक्ति, पुरुष हुआ महिला, सेक्स नहीं करना अगर छोड़ देता है तो उन्हें बाद में बहुत ज्यादा इच्छा होगी, ऐसा नहीं है. इसलिए ये करते रहना चाहिए, ये होते रहना चाहिए. उसकी फ्रीक्वेंसी भले कम हो, पहले रोजाना हो, फिर हफ्ते में हो, फिर महीने में, पर जो कुछ भी हो होते रहना चाहिए. एंड एवरीबडी शुड वेट फॉर इट, शुड लाइक इट. उसकी राह देखना चाहिए, उसको पसंद करना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को सुख देने के लिए. सेक्स हम हमेशा बोलते हैं, हमारे डॉक्टर विट्ठल प्रभु करके एक फेमस सेक्सोलॉजिस्ट थे मुंबई के, वो हमेशा बोलते थे सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बड़ा मैकेनिकल शब्द है. सिर्फ एक स्त्री के योनि में पुरुष का लिंग चला जाए तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं, बट ये मैकेनिकल क्रिया नहीं है. क्योंकि हिंदी में, मराठी में या संस्कृत में उसको संभोग बोला जाता है. और संभोग यानी क्या? समभोग. दोनों पति पत्नी जब इक्वल रूप से, समान रूप से उसका आनंद लेते हैं तभी वो संभोग कहलाता है. तो संभोग इज बेटर एंड मोर होलिस्टिक देन जस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये पति पत्नियों ने हमेशा समझ लेना चाहिए. अब 40 के बाद में क्या होता है, वो मर्द अपने काम धाम में, अपना कारोबार बढ़ाने में, वो अगर कोई सर्विस में हो तो बड़े ओहदे पे रहता है, उसके काम बढ़ जाते हैं, वो बिजी हो जाता है. बट अगर ये नॉन वर्किंग वाइफ है तो वो थोड़ी सी फ्री हो जाती है, बच्चों के चंगुल से बोल सकते हैं अपन, है ना. 25-30 साल की उम्र में बच्चे भी हो गए तो 10-12 साल के हो जाते हैं, तो इमीडिएटली जो छोटे बच्चे रहते 0 to 5 years, उनकी देखभाल कम करनी पड़ती है. सो शी वांट्स टू एंजॉय द लाइफ मोर. और लाइफ एंजॉयमेंट में सेक्स भी आता है, रोमांस भी आता है. तो ये थोड़ा सा नियति का पैराडॉक्स है. मेरा आवाज आ रहा है ना बराबर? ओके. अब वुमेन सेक्सुअलिटी हमने देखा है कि 40 तक तो वो काफी बिजी रहती है,
और होता क्या है कि अपने समाज में अभी भी हम लोग भले ही थोड़े से उच्च स्तरीय फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो साधारण औसतन हिंदुस्तानी जो फैमिलीज है उसमें बच्चियों को या लड़कियों को शादी तक सेक्स खराब है, सेक्स नहीं करना चाहिए, या बच्चों में लड़कों से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, पुरुषों से ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा होती है जिसको हम बोलते हैं इनिबिशन। शुरुआत में तो हम अपने बच्चों को इनिबिट ही करते हैं सेक्सुअलिटी में, और इनिबिशन वर्सेस प्लेजर ये एस्पेक्ट पे आने के लिए वो लड़की को काफी समय लग जाता है, या वो औरत को, उस स्त्री को काफी समय लग जाता है। बट क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अ मैन एंड वुमेन अक्रॉस देयर लाइफ स्पैन। जनरली लोग बोलते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ जब मेरे यहाँ मर्द आते हैं, मुझे लोग बोलते हैं, जैसे मेरे यहाँ 99% ऑफ माई पेशेंट्स आर मेल्स, तो मुझे औरतों के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से आया? डेफिनेटली गायनेकोलॉजी की इतना ज्ञान तो मुझे नहीं है। बट जब मेरे पास एक 60-70 साल की उम्र का पुरुष उसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए या उसके एनी सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए ट्रीटमेंट को आता है, तब हमें इतना जरूर मालूम रहता है कि हर उसका जो पार्टनर है, उसकी बीवी है, शी इज इंटरेस्टेड इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि नहीं है, और तभी तो वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो 40-50 साल के होने के बाद लड़कियों औरतों को इच्छा नहीं होती, उनको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि ऐसा बोला जाता है, अ वुमन कैन एंजॉय सेक्सुअल एक्टिविटी एज फार एज हर पार्टनर इज एबल टू डू। तो कभी कभी मर्दों को ट्रीटमेंट में जाने के लिए उनके पार्टनर्स ने या उनके वाइफ ने भी उनको मोटिवेट करना चाहिए। और मर्दों का हमने देखा है कि पहले 15-20 साल तक तो मैस्टरबेशन और सेक्स विद गर्लफ्रेंड बिफोर मैरिज होता है। ओल्ड एज में एक तो सेक्स प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा रहते हैं या सेक्स बंद हो जाता है। बट मर्दों का क्या होता है कि मर्द ये अपने मर्दानगी के शेल से बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? बिकॉज ही इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ परफॉर्मर। रेस का घोड़ा जैसा रहता है वैसे स्टाइल में मर्द, और ये इसमें मर्दों को औरतें बोलती है ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। बड़े होते हुए समाज में हम मर्द लोग ये समझ लेते हैं कि वी आर परफॉर्मर्स और हमारा ये टास्क है और टास्क हमको अच्छी तरह से आना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई सेक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन। मैं कभी कभी हंसी मजाक में मेरे पेशेंट से बोलता हूं कि क्या सिर्फ ये एक ही चीज है कि जिसके कारण आप इतने डिप्रेस हो? क्या लाइफ में बाकी की भी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? बट एज फार एज द मैन ईगो इज कंसर्न, वो कैसा भी हो, भला हो या बुरा हो, वो मर्द के साथ उसका ईगो रहना ही है। और वो ईगो को ठेस सबसे ज्यादा पहुंचती है जब वो सेक्स कर नहीं पाता। और मर्दों में ऐसा रहता है कि मैं तो कभी भी सेक्स करने लायक रहना चाहिए, सक्षम रहना चाहिए। मेरी पार्टनर जो है, मेरी पत्नी जो है, उसको हमेशा मैंने सेक्स में खुश देना चाहिए। तो परफॉर्मर ज्यादा रहता है, लवर कम रहता है। बट जैसे ओल्ड एज में हर अपना परफॉर्मेंस जैसा हम यंग रहते तब नहीं रहता है, वैसा सेक्स में भी होता है, बट ये सोचा ही नहीं जाता है। तो मर्दों में एक तो परफॉर्मेंस वर्सेस लवर और प्रेशर वर्सेस प्लेजर, ये दोनों चीजों का महत्व समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट दे ऑल्सो विदाउट मच प्रेशर एक्सपीरियंस द सेक्सुअल प्लेजर मोर इफेक्टिव। व्हाट आर द एनिमीज ऑफ सेक्स? ये सभी के लिए है, मर्द औरत सभी के लिए है। और आज का अपना पॉपुलेशन इज मिक्स्ड पॉपुलेशन, दोज हु आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। पहले एजिंग इसका मतलब ये नहीं है कि एज स्टॉप सेक्स और सेक्सुअलिटी, जिस कारण हम आज ये वेबिनार में है। ओबेसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in males as well as female. Sedentary lifestyle again leading to metabolic syndrome and obesity and all. Smoking, alcohol use or drug use, very common in males. Now it has started coming in females also, but not up to that level.
diabetes, hypertension, and coronary artery disease, this trio, Trimurti together, is taking the huge toll of sexuality and sexual function of male as well as females. मैं तो बोलता हूं कि सबसे बड़ा एनिमी कोई है अगर सेक्स का तो वो डायबिटीज है। और आप सब गायनेकोलॉजिस्ट भी जानते हो कि इवन फीमेल डिस्फंक्शंस भी डायबिटीज में बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे लास्ट इज बैड रिलेशनशिप। अभी भी हमारे समाज में हम लोग रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चों से साथ में हैं, बड़े बन रहे हैं, बिल्कुल पटती नहीं है, एक दूसरे का बिल्कुल स्वभाव पटता नहीं है, लेकिन समाज में अभी भी डाइवोर्सेस एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए जिंदगी खींची चली जा रही है। ऐसे भी बहुत सारे हैं। इसलिए तो कभी कभी आजकल 50 और 60 साल की उम्र में भी डाइवोर्सेस दिख रहे हैं हमको, दो दे आर नॉट एज कॉमन एज वेस्टर्न कंट्रीज, बट दिस दे हैव स्टार्टेड। सो रिलेशनशिप पे वर्क करना भी बहुत जरूरी है। अगर रिलेशनशिप नहीं बनती है तो डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। ये हमारे समाज में अभी पता ही नहीं है। झगड़े होते हैं तो एक तो सब झगड़े एक दूसरे के साथ बहुत अलिप्त रह के संसार चलाइए या डाइवोर्स ले लीजिए, इतनी दो ही चीजें हमारे समाज में पता है। पर जाके हम हमारे प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो या हमारे मैरिटल प्रॉब्लम्स हो, वैवाहिक जो झगड़े और परेशानियां होती है, उनको दूर कर सकते हैं, ये पब्लिक को पता ही नहीं है। तो हम डॉक्टर की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग ये बताएं। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारी महिलाएं आती है और वो काफी चर्चाएं होती है, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी वो आपके पास शेयर करती है। तो यू आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से मीडिया, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया आप हो सकते हो उनके ये प्रॉब्लम्स दूर करने के। एंड दीज आर ऑल फ्रेंड्स इन सेक्सुअल प्लेजर, कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। नो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? कंफर्ट एंड सिक्योरिटी के साथ साथ में प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है। अधेड़ उम्र में क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक रूम में सोना, सेपरेट बेडरूम होना, ये अभी भी बहुत सारी घरों में पॉसिबल नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी भी हमारे समाज में लोग 2 या 3 रूम के घरों में रहते हैं, जहां सेपरेट बेडरूम इज अ वेरी वेरी बिग लग्जरी। तो उसके कारण भी सेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कंफर्ट नहीं रहेगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, प्राइवेसी नहीं रहेगी। हम हमेशा बोलते हैं कि यंग एज में प्राइवेसी की भी जरूरत नहीं होती। अ मैन कैन परफॉर्म एनीवेयर, अ वुमन आल्सो बी डिजायरस एट एनी मोमेंट, एट एनी प्लेस, बट दैट डजंट हैपन इन सेक्सुअल मिडिल लाइफ आफ्टर 40s। कोई देख लेगा, इसके बाद में खुद की भावनाएं आने के लिए भी टाइम लगता है, पुरुषों के भी खुद के फिजिकल रिस्पॉन्स आने के लिए भी टाइम लगता है। सो वन नीड्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। फिर डाइट कंट्रोल अच्छा रहना, वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्सरसाइजेस। अगर डायबिटीज है तो गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। लोग ध्यान ही नहीं देते। हमारे पास जब डायबिटिक्स आते हैं तो दे डोंट केयर अबाउट देयर डायबिटीज, नाइदर दे टेस्ट, नाइदर दे डू एक्सरसाइज, या वो उनकी दवाइयां बराबर नहीं लेते, या जो रिस्ट्रिक्शंस है डाइटरी वो नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद फिजिशियंस और डायबिटोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेरी बिजी शेड्यूल डोंट टेल। सो हमें वो भी बताना चाहिए ऐसे जब पेशेंट्स आते हैं तो, या पेशेंट्स आज जो जनरल पब्लिक सुन रहे हैं उनको भी ध्यान में रहना चाहिए कि सिर्फ दवाई नहीं, लेकिन एक्सरसाइज और कंट्रोल ऑफ डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आफ्टर 40-50 टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट डिक्लाइनिंग, तो उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। मोटापा, डायबिटीज, coronary artery disease, depression, psychiatric problems, thyroid disorders, these also leads to low testosterone level. गुड पार्टनर ने हमें एक दूसरे को सेक्स की जरूरत है, ये समझना भी जरूरी है। और लास्ट इज गुड डॉक्टर। बहुत बार डॉक्टर नजरअंदाज करते हैं। अब डायबिटीज होता है तो वो पेशेंट्स को उनके ट्रीटिंग डॉक्टर ने आपका सेक्स लाइफ कैसा चल रहा है ये पूछना, एक क्वेश्चन पूछना इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि पेशेंट हमसे पूछेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम खुद को लेबल करते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट करके लेबल करते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली पूछेंगे। बट आप जब गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन हो या सर्जन हो, आपके पास डायरेक्टली वो नहीं बोलेंगे। बट एज अ डॉक्टर हमको पता है कि ये डिसीजेस के कारण सेक्स प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो अगर डायलॉग हमने ही शुरू किया
सो लेट अस टॉक अबाउट सेक्स विथ आवर क्लाइंट्स। अगर ये हम शुरू करते हैं तो शायद हम उनको मदद अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इसलिए मैंने इसको गुड डॉक्टर लिखा है। सोसाइटी की एटीट्यूड भी है कि अभी क्या है, 40-50 साल की उम्र होगी, ये सेक्स की क्या जरूरत है, सेक्स नहीं किया तो भी चल सकता है, सेक्स प्रॉब्लम क्या है, इससे कोई जान तो नहीं जा रही है, आराम से देखेंगे, जब टाइम मिलेगा, जब पूरी प्रायोरिटीज खत्म हो जाएंगी तब शायद ये प्रायोरिटी बनेगी। कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये भी एक बिलीफ, मिसबिलीफ है। यहाँ बहुत बार लोगों को लगता है कि इसमें मॉडर्न मेडिसिन, जो अपन खुद को बोलते हैं एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन, इसमें शायद इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं है। आयुर्वेदिक फिजिशियंस या बाकी जो लोग, उनको लगता है कि सिर्फ आयुर्वेदा और नॉन मॉडर्न मेडिसिन में या नॉन एलोपैथी डिसिप्लिन में इसकी ट्रीटमेंट होती है। ये भी बड़ा एक गलत प्रचार समाज में है। आखिरी में हम डॉक्टर को भी लगता है यार मैं क्या करूं, इतना टाइम इसको क्यों दूं, मेरे इतने सारे पेशेंट, और होता है ऐसा। लेकिन फिर हम वही बोलते हैं कि इसीलिए हम तो लोग सेक्सोलॉजिस्ट करके बैठे हैं ना। सो अ गुड रेफरल टू योर फ्रेंड हु इज डीलिंग विद सेक्सुअलिटी कैन बी हेल्पफुल टू दिस पेशेंट्स। सो हम अब आते हैं सेक्सुअल बिहेवियर पे। मैडम, हाउ मच टाइम आई विल हैव नाउ? बिंदल मैडम? Yeah, 10 minutes. Yeah, 10 Okay. minutes. Yeah, 15 minutes you can take, 10 to 15 minutes. ओके, थैंक यू। सो सेक्सुअल बिहेवियर पे जनरली 40s के बाद में क्या होता है कि जनरली औरतें बोलती है यार कि यही करते नहीं, कुछ इनको जमता नहीं। क्योंकि मेरे बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि जब दोनों कपल उनके पास कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो जो लेडी रहती है वो धीरे से बोलती है कि डॉक्टर साहब जरा इनको कुछ चीजों के बारे में समझाइए। तो बहुत बार औरतों को ऐसा लगता है कि शायद हस्बैंड ने ये लीड लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अ वुमन आल्सो कैन टेक अ लीड। टू इनिशिएट कैन बी स्टार्टेड बाय अ वुमन आल्सो। मर्दों में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम उनके प्रॉब्लम्स, उनके डिसीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, आर्थराइटिस, प्रोस्टेट, काफी थायराइड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसके कारण भी उनके सेक्सुअल बिहेवियर कम होते जाते हैं। एजिंग अफेक्ट करता है मर्दों को, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी रह सकती है, बट उसका फायदा भी हो सकता है कि लेजरली टाइम अच्छा है, जल्दबाजी नहीं है, जो यंग एज में खुद को प्रूव करने की जो एक इच्छा रहती है, महत्वाकांक्षा रहती है, वो नहीं है। एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, अभी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिव साइड भी है एजिंग की। नो देयर इज नथिंग टू प्रूव। मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैं मेरे थोड़े से एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं मेरे एजेड पेशेंट्स को बोलता हूं, अरे अभी यार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको है तो कोई फांसी तो देने वाला नहीं है, या अभी ये एज में आपकी बीबी पे आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है, आपने चाहा तो भी नहीं जाएगी, है ना। तो व्हाई टू बी सो नर्वस अबाउट इट, व्हाई टू बी सो मच प्रेशराइज्ड अबाउट इट। सो ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है सेक्सुअलिटी के। अब निगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, अराउजल टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टिमुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, वुमेन में भी लुब्रिकेशन कम होता है, खुद को अनअट्रैक्टिव समझने लगती है, अनडिजायरेबल समझने लगती है। बहुत बार कुछ रोगों के कारण, कुछ सर्जरीज के कारण, कुछ जैसे ब्रेस्ट सर्जरीज होती है या हिस्टेक्टोमी वगैरह के कारण भी थोड़ा सा लो एस्टीम आ जाता है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के, ये निगेटिव बातों के ध्यान में रख के भी ट्रीटिंग फिजिशियंस ने उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। और मर्दों में इरेक्शंस कम रहेंगे, लेडीज लोगों में बहुत बार ऑर्गेजम आता है तो पेनफुल ऑर्गेजम रह सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस पेनफुल रहते हैं। तो ये निगेटिव एस्पेक्ट भी है, और इसके लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कि हम अभी 50s 60s के हो गए तो हमको ट्रीटमेंट लेना नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जैसा हमारे कहा तो मैंने पढ़ा था कि सेक्सुअलिटी कहां तक है, इट इज सेड दैट सेक्सुअलिटी इज फ्रॉम वूम टू टोम। वूम इसलिए कि यूट्राइन, इंट्रा यूटेराइन भी बहुत बार मेल फिटसेस के इरेक्शन ऑफ पेनिसेस
यूएसजी में देखे गए हैं, और till the time that person sleeps permanently in a tomb. So sexuality is from womb to tomb. It's throughout our life. So we should not be ashamed of our age and sex both. हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहते हैं, फिर एंजाइटी बढ़ जाती है, निगेटिव इफेक्ट एटीट्यूड्स अबाउट सेक्स एंड रिलेशनशिप, ये भी एक बड़ा कारण रहता है, एंड लैक ऑफ प्राइवेसी, जो मैंने बोला था कि अपने आप पूरी सोसाइटी सोचती है कि अभी हो गए 50-60 साल के, दे डोंट नीड अ सेपरेट बेडरूम. मेरे एक दोस्त थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे जब मैं यंग था तब, कि संजय, कोई भी फ्लैट, जब अब आजकल शहरों में तो फ्लैट संस्कृति आ गई है ना, तो फ्लैट लेना है तो 2 बेडरूम का फ्लैट कभी नहीं लेना, ऑलवेज हैव अ 3 बेडरूम फ्लैट, नहीं तो 50 और 60 साल की उम्र में ड्राइंग रूम में सोना पड़ेगा. तो ठीक है, जो सच्ची में दोज हु कांट अफोर्ड, बट हमारे यहाँ ना लोगों की सोने की हैबिट भी बड़ी खराब है. यानी यंग कपल आता है 35-40 साल की उम्र का, एक ही बेडरूम में सोते जरूर है वो, लेकिन दोनों मियाँ बीवी के बीच में 2 या 3 जितने भी बच्चे उतने भी सोते रहते. तो गायनेकोलॉजिस्ट कैन टेक द लीड इन दिस, कि जब आपके पास लेडी आती है तो उसको थोड़ा आपने समझाना चाहिए कि सेपरेट बेडरूम इज इंपॉर्टेंट इवन इफ दे हैव चिल्ड्रन. एक ठीक है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में छोटे बच्चों को भी दूसरे रूम में सुलाते हैं, वैसा नहीं करेंगे हम, बट लड़का लड़की 4-5 साल के बाद में उनको सेपरेट बेडरूम ऑफर करना चाहिए इफ इट इज पॉसिबल. तो वो सेक्स लाइफ अच्छी होने की एक शुरुआत है. बहुत बार सेपरेट बेडरूम भी रहती है, पर वो उसको दरवाजा बंद नहीं करना, क्योंकि लड़के क्या सोचेंगे, ये भी एक बड़ी लोगों के दिमाग में एक चिंता रहती है. तो हम बोलते बच्चों को सब पता रहता है, आजकल 10-12 साल की उम्र के बच्चों को सब पता रहता है. वो पुराना जमाना नहीं है कि बच्चा कोई बंदर ने लाके दिया है, क्या झाड़ के नीचे मिला था, वैसा एवरीबडी नोज नाउ दे आर अ सेक्सुअल बीइंग एंड दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देयर पेरेंट्स. तो जब भी सोना है तब अंदर से दरवाजा लगाना चाहिए, अधेड़ उम्र में भी. ये भी आदत बचपन से ही बच्चों को सिखानी चाहिए. बच्चों को पढ़ना चाहिए कि माय मदर एंड फादर इज इन द बेडरूम, नाउ दे हैव देयर प्राइवेट लाइफ, which one should not disturb, or while going to a bedroom they should knock the door of the bedroom of the parents. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं छोटी छोटी चीजों को ही ज्यादा उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं आज. एंड देन वी कम टू दी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स. सेक्सुअल प्रॉब्लम्स मर्दों में होते हैं, काफी होते हैं. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, बहुत बार रिटार्डेड इजैकुलेशन भी होता है, या डिलेड इजैकुलेशन भी हो सकता है. डायबिटिक्स में और नर्व इंजुरीज के कारण ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को, इट कैन गो रेट्रोग्रेड टुवर्ड्स द ब्लैडर because of prosthetic surgeries, because of diabetes, it may go there. And dyspareunia because of diabetes, balance prostatitis, ये होने के कारण भी दर्द होना भी पॉसिबल होता है मर्दों में भी. Problems in females, dyspareunia, vaginismus, orgasmic dysfunctions, desire disorders, these are all very common. Only thing is that they don't come more prominently to the doctors. Maybe they are expressing themselves in front of you all gynecologists, but at least they don't come too much to us. But many times a simple lubricant can help a woman to avoid dyspareunia. और ये जनरल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये एक जनरल सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज लाइफ इज बिजी, लाइफ इज वेरी फास्ट, देयर आर मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ लाइफ. सेक्सुअल बोर्डम और मोनोटोनी आ जाती है कि वही सेक्स, वही पोजीशन में, वही बेडरूम में, वही पार्टनर के साथ. उसका आंसर मैं बाद में देने वाला हूं. इंपेयर्ड फिजिकल सेक्सुअलिटी, सेक्स होता नहीं इसलिए डिसयूज, एट्रोफी तो नहीं बोलता, बट एट्रिशन बाय डिसयूज, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ड्यूरिंग एल्डरली एज, कल्चरल इनहिबिशंस जिसके अपने आप काफी जिक्र किया है, एंड मैरिटल डिफिकल्टीज. सो द गाइडलाइंस इज
ये सोचना बंद कर दीजिए कि एज के कारण सेक्स कम होते जाएगा। फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है लेकिन सेक्स कम नहीं होगा, इच्छा कम नहीं होगी, आनंद कम नहीं होगा। औरतों ने भी विलिंगली खुद की डिजायर एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि क्या है, औरतों एक्सप्रेस करेंगे डिजायर तो ही मर्द हमारे पास स्टेटमेंट को आएगा ना, नहीं तो क्यों आएगा। अवॉइड ओवर इंडल्जेंस इन फूड, ड्रिंक्स एंड फिजिकल वर्क, ये विशेषता मर्दों के लिए है। एंड अवॉइड रूटीन इन सेक्स ऑल्सो, थोड़े बहुत चेंजेस करना चल सकता है। सेम सेक्स विद सेम पार्टनर इन सेम पोजीशन इन सेम बेडरूम में पार्टनर सेम रख के बाकी की चीज बदल सकते हैं, बट लोगों को लगता है पार्टनर बदलना चाहिए, बट पार्टनर बदलना बड़ी कठिन। और मैं हमेशा बोलता हूं कि सेक्सुअल जो कंफर्ट है वो रेगुलर पार्टनर के साथ में ज्यादा अच्छा है, नॉट विद द न्यू पार्टनर। द चांसेस ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शंस आर मोर इन न्यू पार्टनर्स। So same sex, sorry, same partner is the key in elderly age. Clear, direct and specific communication. कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको रोज इच्छा होती थी सेक्स की और उसकी वाइफ को पूछता ही नहीं था, एंड ही यूज्ड टू मैस्टरबेट। मैंने उसको बोला तू तेरे वाइफ को पूछ तो सही कम से कम। बट पीपल दे डोंट टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल डिजायर्स, देयर लाइक डिसलाइक्स विद देयर पार्टनर्स। हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन ही नहीं होता। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्स इज दैट, हमेशा ऐसा बोला जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट सेक्स ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ मैन और अ वुमन। सो दैट लार्जेस्ट सेक्स ऑर्गन इज स्किन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इरोजेनस जोन्स इन आवर बॉडी which make us erotic. We have to identify them. So affectionate touch is more important. Even non-sexual touch is also very important. Touching outside the bedroom, non-genital touching to each other also is important. Because if we touch our partners in front of our children affectionately in a non-genital way, that will give a good image with them also. So non-genital touching is also very important. So this is lastly, remember that sex life is not compulsory. You can do it differently. Adjust your expectations. Communicate about your new needs and expectations. Forget about performance. Expect temporary setbacks. Sometimes sex will not be successful. Use props to improve your sexual mood. कुछ अच्छा मूड बनाने के लिए कुछ सेंट है, रूम फ्रेशनर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग्स है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट आउट रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फोर प्ले थोड़ा ज्यादा करिए, उसको फोर प्ले बोलने के बजाय रोमांटिक रिलेशनशिप बोलिए, रोमांस बोलिए। यूज अ लुब्रिकेंट, स्ट्रेंथन योर pelvic मसल्स। अबाउट न्यू पार्टनर्स, नो न्यू पार्टनर्स, because that will keep the relationship intact. So no रखना भूल गया मैं, but it is a no new partner. So happy sexual life is married, no drug use, physical fit, free of medications as far as possible. marital relationship में time, talk, togetherness, touch and trust, ये 5 बहुत important T's है जो ध्यान में रखना चाहिए। नॉन फोर्सफुल कम्युनिकेशन में अवॉइड आई, टॉक वी, थैंक्स, सॉरी शुड बी यूज मोर ऑफन। फॉर women it is not only for husbands, it's for you also. You also can initiate and touch each other, touch your partner, male partner also. So don't change partners, but change the style. These are 10 commandments of happy sex life. Be romantic, some variety in foreplay, no hurry, warmth and sincerity, not only climax oriented, mutually acceptable sex, about oral and anal. Many times a woman doesn't want to do that, so respect her. Lights on. It's not always that you should do sex in a dark room. Hygiene is also very important. Anticipate desires, likings and dislikings of each other, and communicate about desires, likings and dislikings of sex. So it's very important. Lastly, just I want to mention that 4th September is World Sexual Health Day, and World Association of Sexual Health, WAS,
has declared this year's theme as consent. Previously, the theme was pleasure, but the pleasure is only with a consenting partner. So, even if we are married, we should always look for the consent of our partner. It should not be forceful, or it should not be exploitative also. So, always, it's not written consent, I say, but always see that your partner is also willing to perform in sex. So I think that is all about midlife sexuality. Thank you very much for patient listening. Again, at the last, I thank Indian Menopause Society, Dr. Binal Shah and Dr. Neeraj Jadhav for involving me in this very important webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanjay Deshpande. You have made a wonderful, very informative deliberation. And the main thing, जो मैं समझती हूँ, हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आते हैं, वो ज्यादातर ड्राइनेस ऑफ वेजाइना या करने का मन नहीं करता है, उसको लेके आते हैं. और व्हाट आई फील कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, ये बताओ, तुम्हारा मन नहीं करता है या डिस्चार्ज करने के समय तुम्हें ड्राइनेस फील होती है. और थोड़ा सा बात को चालू करने से ही हर पेशेंट सामने आता है कि दीदी मेरे को ये प्रॉब्लम है. अगर वो पोस्ट मेनोपॉजल है तो हम लोग देखते हैं वेजाइनल एट्रोफी वगैरह ज्यादा कॉमन होती है, जिसको हम लोग सभी ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कभी कभी वो आती है, मेरे हस्बैंड का तो मन ही नहीं करता है कभी कुछ करने का. तो फिर उसके कारण को ढूंढना होगा कि मन क्यों नहीं करता है. क्या वो अपने कामकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है या उसका डिजायर लो चला गया है. तो डेफिनेटली हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. और डॉक्टर बिनल शाह ने इसका ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत क्या कहना चाहिए इंफॉर्मेटिव चीज है, जिससे कि मैंने सोचती हूँ कि जितने भी पब्लिक अवेयरनेस कमेटी के पब्लिक ने सुना होगा वो डेफिनेटली इससे लाभान्वित होंगे. हमें अपने पार्टनर को पूरा रेस्पेक्ट करना चाहिए. एक बात जो मतलब मेरे मन में कई बार आती है कि आफ्टर मिड लाइफ कई पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितनी बार करने से इट इज ओके. तो मिड लाइफ में उनको ये पता नहीं चलता है कि कितना इज ओके. और मैं उनको ये जवाब देती हूँ, जब तुम्हारा मन करे तब तुम कर लो, दैट इज ओके. पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि जितना तुम्हारा मन करे. और कभी अगर पार्टनर नहीं भी चाहता है तो फीमेल कैन वेरी वेल स्टिमुलेट द हस्बैंड. तो मैंने तो कई बार लोगों को बताया है कि हाउ टू डू अ फॉन्डलिंग एंड हैव अ गुड सेक्स. तो पेशेंट के समय टाइम देने से, और मेरे को लगता है इस तरह के और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने से डेफिनेटली लोगों की जो झिझक है वो भाग जाएगी एंड दे विल बी मोर फ्री टू डिस्कस द थिंग्स विद अस. डेफिनेटली एजुकेटेड पर्सन्स आर कमिंग टू अस एंड डिस्कसिंग. लेकिन गांव की औरतें बोलती है अब 40 का उम्र हो गया, अब क्या करेगा सेक्स करके. लेकिन हमें ये बताना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और हस्बैंड की इच्छा करती है, तो इट शुड बी रिस्पेक्टेड प्रॉपरली. थैंक यू. बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. Sure. Thank you, Nirmala ma'am, and thank you, Dr. Vidya. Thank you for coming up last minute. And yes, Nirmala ma'am, you summed up very nicely. और yes, Dr. Sanjay Pandey, I'm really thankful कि नीरज भाई ने आपका नाम suggest किया, and I'm so happy that आप आज हमारे लिए time spare कर सके, because you gave a very good idea about the impact of social, cultural factors and various phases of life on sexuality. मतलब काफी सारे ऐसे पहलू हैं जीवन के, हमारे समाज के, जो मतलब इट इज इंटरवोवन. आप किसी भी एक चीज को अलग से ट्रीट नहीं कर सकते, एक चीज को अलग से देख नहीं सकते. एवरीथिंग हैज अ इम्पैक्ट ऑन ईच अदर. तो आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ और बहुत सरल भाषा में काफी अच्छा समझाया है. एंड आई एम हैप्पी कि वी आर हैविंग दिस यूट्यूब लाइव, सो वी विल आल्सो बी हैविंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर वेबिनार, जो हम बाद में हमारे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे. एंड आपने सही बोला कि इट इज द इमोशनल इंटीमेसी एंड नॉन सेक्सुअल फिजिकल टच. मतलब एक जादू की झप्पी या एक सिंपल किस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट हैविंग अ पेनिट्रेटिव सेक्स. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय देशपांडे, एंड प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें. और नाउ वी आर इनवाइटिंग आवर नेक्स्ट स्टार स्पीकर.
Thank you, Yeah. Dr. I'll just add one thing more, Binal. Yes. Apart from a detailed description, at the same time, he gave lot of practical solutions to practical problems. I think that was very nice what he discussed. So now we move on to we move on to the most exciting session on how to keep the spark alive after 40, for which we have the one and only Dr. Narendra Malhotra, sir. His oratory skills are fabulous, and it is always a pleasure to listening to him. And Dr. Binal just said you are the star speaker for today, sir. And to conduct this session, I will invite Dr. Ruchira Garg, who is president of Menopause Society Agra, and Dr. Nalini Tandon. She is vice president of Menopause Society Lucknow. Please accept to be the chairpersons for this session. Welcome to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. So it is a great pleasure to invite Narendra Malhotra, sir, who is really a star speaker and pioneer of so many organizations, and he has been the president of so many organizations. And he's the pride of Agra, he's the pride of India, he's the pride of Foxy, IMS, all the organization. It's really a pleasure to invite sir and listen to sir on this very important topic of sex life after hysterectomy. So over to sir. Can you give me sharing rights? Can you remove this here? So very good evening to all of you. It's indeed a pleasure to be here in this webinar discussing all the problems, her unspoken problems, which I used to call since the last 4 or 5 years. And nobody was talking about these problems. And then I would always give a talk on her unspoken problems in all the cosmetic and aesthetic and regenerative gynec meetings. And finally, we have all realized that this cannot be hidden behind, and there has to be a clear-cut guideline and a clear-cut message which should go on to everyone, including the general public. And what I see is there is so much general public who's logged on to this Club 35, YouTube, and they're all listening. Sab sun rahe. तो आज मेरे को बोलने को बोला गया how to keep that spark alive or rejuvenating life after sex life after 40 या धुन बदल कर तो देखो. That is my, so ignite that spark in you. Now this talk is dedicated to all those couples over 40 who have suffered in silence and they don't come out. And we'll try to, जो जितना हमको अभी बताया डॉक्टर साहब ने इतने beautifully that what are the problems and how the problems should be overcome. We will be touching those and a little bit of more on how to keep the spark alive. माचिस चाहिए, माचिस से आग लगानी चाहिए. So first thing is, human beings are never too old to enjoy happy and healthy sex life. So human beings के लिए sex life की कोई age नहीं है. That we have to remember. So for what 40? And sexuality and sex are two different things. So sexuality is a very complex human nature. And this is just not penetrative sex. It is a whole body or how you feel towards each other. और क्या feel करते. जब हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, Master and Johnson, husband wife were the two most biggest sexologists ever born, I believe. They said sexuality is different from sex. Sexuality एक बहुत broad term है and many components है, while sex is just sexual intercourse. So, and all of us are sexual beings. And sexuality begins at birth, rather, as we just heard before, even intrauterine, and we've seen fetuses in our ultrasound. And if you saw our fetal well-being video of mine when I give a talk, we've seen the fetuses fondling with the penis, and the penis was erect, and what we call as fetal masturbation inside in utero. So we've recorded that, and we have videos of that also. So sexuality begins intrauterine and finishes when you die. Now people
people begin to learn about sexuality from birth. पैदा ही से हमको पता लग जाती है कि what is sexuality. और फिर then various sources, family क्या बोलती है, community क्या बोलती है, faith and religion क्या है, friends क्या सिखाते हैं, media क्या सिखाता है आजकल, that is accelerating the sexuality and accelerating sexual maturity in women and in girls and boys. Boys, obviously, it was much more before also because of now girls, which was first said sex is taboo, now they are also opening up, and you see a lot of sexuality and sexual behavior increasing in girls in right from teenage. So people ke sabke different opinions. Someone would say it's totally ban it, don't tell it. Dr. Jaideep and we were in a radio show, in a television show with some politicians and everything, and we were talking about sex education in schools. So we said, people, you have to tell the boys and girls, and especially it's a COVID school, you have to tell them more, what is it? So this politician got up and said, डॉक्टर साहब आप सब गलत सिखा रहे हैं, आप किसी को कुत्ते बिल्ली को किसी ने सेक्स करना सिखाया, बंदरों को किसी ने कैसे, I said सेक्स करना नहीं सिखा रहे सर, we are telling them sexuality. So that even when our politicians don't understand, the policies cannot be made. And we have to understand our sexuality is normal and it is a healthy part of it. So we just heard that the biggest organ for sex is your skin. And the second biggest organ is your brain. So sex is in between the ears and not in between the legs. And the most powerful sensual sexual organ is the brain and not the genitals. That we have. So everything starts here. How you feel, how you... Let's see some definition. Sex is a common word used for sexual intercourse. Sexuality refers to a total expression of who you are. Handsome, great, sexual, macho man, things like that. Sexy girl, model, kitni sundar curves hain, kya hai, all that is sexuality. And it begins as birth, I told you. And so it tells you your femaleness and tells a maleness. So that is what sexuality describes you. So is 40 elderly or sexuality in elderly? 40 is definitely not elderly. It is very misunderstood, very neglected and ignored. And of course, because it is being disapproved by others, log kya kahenge, घर में क्या कहेंगे, बच्चे 20 साल के हैं, बच्चों का टाइम है, हमारा टाइम नहीं है सेक्स के लिए. That is what is misunderstanding of it. And 2 रूम का फ्लैट है तो मम्मी पापा अब आप बाहर सोइए, हम लोग का टाइम है अंदर सोने का और उसका. So that is what it is. So the joys of sex are equal rights of older adult. In fact, WHO says health is complete when it is mental, physical, and sexual and psychological. So it's an integral part of a personhood. आपकी personality का एक अंदरूनी हिस्सा है your sexuality, and you have full right to exercise the sexuality. And sexual right protection and promotion should be a part of daily existence of all of us. And sexuality should be our positive aspect of life, not the negative aspect, not to be laughed at or mocked at or even eve teased at, or what we say. So kya hai 40? 40 hamara aim hai to restore a healthy sex life. But a lot of men are very naughty at 40 because now they are at the peak. Women are still struggling with the teenage children or maybe just college going children. And for some, the spark is always burning. But for a lot of people, the spark has gone dull and dim, and the torch has to be reignited. New batteries have to be fitted. So there is a sexuality decline. We all know that in women and in men. But women are different. We will say some women have a sexuality increase rather than decline. So with increasing age, everyone will fall कि sex life जो है drive कम हो गई. और आजकल के जमाने में तो और कम हो गई because your laptop is your sexual partner. Even in bed, on your lap where you all should be attached, it's a laptop lying there. And so that is a major problem. And of course, there is declining levels of hormones in men and women both. And the testosterone natural fall can, while in women, some women may have an increased level of testosterone because of decreasing estrogen. And they may be more sexual oriented or sexuality. So sexual
disorder can also be because of relationship problems. But it is not always relationship, but that sexual desire. And then sexual desire is dulled because of stress. लोन कैसे पे होगा, कार खरीदनी है, ये खरीदनी है, बच्चे स्कूल में क्या करेंगे, कॉलेज की फीस के लिए पैसे नहीं है. All that is there. That thakan, tiredness. You're working 8 o'clock in the morning to 10 o'clock in the night. People in USA and all, to reach office at 8 o'clock, they start from home at 5 o'clock. And they come back at 10 because traffic को beat करना है, driving इतनी long है, drivers नहीं है, बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, non-communicable diseases हैं, diabetes, hypertension, which all dull the. And then of course drugs, psychotropic drugs, all that will, some contraceptive medicines, some endometriosis treatment medicine, all that will dull. Anti-androgen medicines will all dull your sex life. Alcohol, hormones, aging, sub जो है reduce करता है, even women. Then there are so many non-sexual diseases, non-communicable diseases which can reduce the libido in both women and men. And blood pressure is thyroid, diabetes is the commonest one. And there are so many medicines, we are popping up pills every day, especially antidepressants. You ask, depression कोई बीमारी थी नहीं 10 साल पहले. When I was in college, depression in my book was only one paragraph or one page, I think. Today, there are 4 chapters of depression and antidepressant medicines. So that is all which has made a whole mess of human life. And then, of course, painful sex is dyspareunia, vulvodynia, vaginismus, which menopause, estrogen deficiency, infections, vaginal infections, lichorias, which they don't tell, SUI, cough, urine leakage, bad smell, all that can. And then there are other causes of low sex drive. And as I told you, it's in the brain. When you see a male and a female brain, the male brain, the major part is sex. The second major part is alcohol and recreational drugs. And the third major part is the ball games or cricket or football. While in women, the sex is somewhere in the corner, which can't be seen also. It's chocolates, shoppings, fantasies, all that. So that brain has to be remodeled towards the sexual drive so that low sex drive, stress and all, and esteem and depression don't hamper all this. Now, as women approach 40s, the other women, they may experience sudden sense of liberation. The children have gone to college, so free of children. रोज की झंझट, रोज की झिकझिक, नाश्ता क्या बनाओ, खाना क्या खाओ, लौकी नहीं खाता, ये तोरई नहीं खाता, वो कुछ नहीं खाता, Zomato से order करता है every day. So all that is gone. And that may increase the sexual libido and response. And a woman begins to look at sex as a different angle for her own personal liberation now and for self-expression. But again, this may not be the case with all women. And that may be a change in it. So in women, the sexuality changes. And as you see, the mind from chocolates and other fantasies comes back to sex taking also an important part in the brain. So as women age, she may be very more comfortable with sexuality because pregnancy होने का डर नहीं है, husband ने vasectomy करा लिया, children are grown up, there is no one in the house to disturb them or knock on the door if they're not in joint families, or if they're well-to-do, they have a separate room and they can go for long drives and they're taking life easy and comfortable. So with women, sexuality at 40 is different. And hormones also play a major role in this. Hormones, estrogen का कम होना, testosterone, peripheral estrogen बनना, but सब लोग agree नहीं करते कि it's only the hormones. And it may not be the hormones, it may be the other things. So if you're turning 40 or you've turned 40, does it mean that no sexual intercourse anymore? Well, maybe not, because there are 7 myths around sex and aging. So getting older, बूढ़ा होने से doesn't mean goodbye to sex. Society tends to hold the idea कि अब old हो गए, अब sex आपके लिए कुछ नहीं है, enjoyment कुछ नहीं होता जिंदगी में, बच्चे पैदा हो गए, sex was only for procreation and nothing else. And physically possible for elders to be sexual. And there are no boundaries. And sexual desires are not supposed to fade away your age. तो आप age हो गए तो sexual desire को कम रखो, दिखाओ नहीं. That is what it is. And it's a very common myth and misconception that aging, in aging women, that we are here
gathered in this webinar to break this. So women do have a point. Years of experience in being comfortable in their own skin. Now they want something spontaneous. जो वो नहीं करना चाहती थी, अंदर fantasy में थी because of children making and because of so many things, they want to come out with it and have a fulfilled sexual life. So they actually may be more sexual and sensual at 40. With men, it is overeating, obesity, cigarettes, lack of smoke, no proper exercise, no proper diet, misuse of recreational drugs, unhealthy diet, and this will all make that spark not reignite. जलेगा ही नहीं कभी spark अगर ये सब में होएगा, और बहुत जल्दी बुझ जाएगा, और maybe permanently बुझ जाएगा. So let's see what are the myths about sex life after 40, and does the spark really die off? So myth number 1, beyond 40 interest in sex goes down. ये सब लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है. To stay sexually active, you have to stay physically active. So sexual function does not go down, only the performance may go down a little bit, and the way if you are not active. Second is women's interest is affected by psychological factors only. No, I told you it is hormonal, psychological, physical infections, all that, repeated childbirths, looseness of vagina, tightness of vagina, vulval pain, all those affect physically, medically, mentally. And menopause, lubrication problems, or dryness is the major problem. So it is a mixture of all problems. It's not psychologically women is no every time. The myth number 3 is that woman loses her ability to orgasm with aging. First of all, maybe the orgasm is a little less intense, but that doesn't mean that you're losing interest or you cannot have an orgasm, because these sex and orgasms are not bound by age. At any age, even at 65, 70, women and men both can have fairly good, satisfying orgasms. Of course, the hormonal fluctuations will lead to less libido and tougher to reach orgasm, but it is achievable. And it is not always necessary to have a clitoral or a vaginal orgasm. It can be, even orgasm can be attained by many other physical touching and all, which we heard. Myth number 4 is, as the man ages, he loses his capacity to get a proper erection. Now, erection of penis is independent of age. Men over 80 can also have a good penile erection. There are medical disorders, circulatory disorders, which high blood pressure, diabetes, which will affect that. And a drop in hormones will affect that. At the most, a man will need a little bit more of physical stimulation to get the desired erection, but it is always achievable. Can always be there, and the next myth is inability to get an erection is an emotional problem. No, it is not. It's a myth. Actually, only physical problems, prostate, circulation, and the diseases will cause major erectile dysfunction in men. Psychological aspect is there, and that can be easily sorted out. Then myth number 6 is masturbation diminishes the sexual erection in later ages. Now, masturbation actually increases the sexual pressure with or without the partner, and for both, for men and for women. And when women, it helps to keep the vaginal tissue moist, elastic, and boost the hormonal level and fuels the sex drive. So your sex drive is going to actually increase, and it should be not said that masturbation is the end. Older people should not have sex. That is the biggest myth which we face. Aap old ho gaye ho? Forget it. My mom, dad, I caught them having sex. Oh my God, what are they doing? It's not their age. Sex does not belong to younger generation. At any age, you can enjoy a sexual relationship if you are fit and healthy. So those were the myths. And now let's see how we will try to increase the libido or how to ignite that spark. So there are lots of things you can do to boost the... When you read a newspaper, you will see every day, and especially Sunday newspaper, classified, colored ads. There'll be hundreds and hundreds of advertisements
how to increase the length of the penis, how to have 2 hours of pleasure, sexual intercourse, how to use the Japanese tail, how to use Sandeka tail, and all that is there. So all those are junk. All those are not true. Please don't try them. If you try them, it maybe help you psychologically. मैंने आज लगाया तेल and मेरा टनाटन. So that is it. So eat some good foods which help in sexual, like seafood, oysters, cocoa, maca powder, watermelon, avocados. Spend your time with your partner in talking, discussing emotional needs, because that is very important after 40. Take time to do some exercise and meditate and release that anxiety. You're always pent up. कल क्या होगा, कल मंडे है, कल ट्यूसडे है, मेरा इतना कैसे काम करूंगा, ये करूंगी, कैसे करूंगी, all that tension. Eat healthy diet. Do a daily exercise, especially yoga, tai chi, walking, anything, weights, everything, anything, any exercise is good for 20 to 30 minutes. Make sure that you're well rested. So have a good sleep. And if you are have early to bed, early to rise is the best formula you can follow. Eat your dinner by 8, 8:30, go to sleep by 9, 9:30. Wake up at 5:36. That is the best time, even earlier. And if the problem still exists, of course, meet doctors who are there to help you in all these. So igniting that spark, women may find it a little bit more difficult to get into the mood of sex than men do. We always say that men need a place and women need love, 20 other things to get them excited. Men only need a place. Testosterone is there. And if you're not even able to have a penetrative sex, a good foreplay would be good enough to give you much relaxation, and so as equal to sex. But that you have to be mutual and for both. So make an effort. Now this was a video we made for Foxy, and then when the Foxy was saying life after 60. Oh shit, I told you my age. So make efforts to do some fun together. So just take holidays, sing songs, even if you don't know, dance, even if you don't know, just do that. Take part in these things which are there, and do some activity, do anything funny, anything out of the blue. You're working as it is between labor rooms, forceps and ventouse delivery. Go ahead for gynecologists, do something like this. Move out of your comfort zone. Go somewhere different and enjoy, not sexually, enjoy with non-sexual touching, newness, mystery, enjoy a mountain climbing, trekking. This is snowfall. Sometimes when the things are not working, take a holiday from each other. Maike chali ja. So it's true that absence for a short time, not a long time, then it gets irritable, can make the heart grow fonder and that love may come back, the spark. Then some people who always believe in schedules and this thing, put sex in your schedule. Monday, 8 p.m. to 8:30, sex. Tuesday morning, 4 a.m., sex. Wednesday, 5 p.m., we will have a break because I'm coming home early, so sex. And put that board there where your children can't see. So schedule the sex, put sex in your schedules, and you see how things will change. Erotic thoughts, erotic books, erotic movies, not blue films, soft erotism or single or double X, not the 444X. Those are useless. Those will actually spoil your sex life if you are watching too much of porn and too much of blue. Watch love stories and not that, and engage yourself as a sexual person apart from it. Talk to each other. Especially if you have had an argument, just solve it immediately. Please don't take arguments to bed, and it is always better to sort them out immediately by talking to each other. Now, sexuality after 40, older males will fear कि मेरा sexuality खत्म हो गया. If I don't get an erection, तब क्या? What will she think? What will she say? Older women, it's undignified and disgraceful now because there is decreased libido, increased time for arousal, more rapid reversion to pre-arousal state, poor quality of erection, reduced lubrication, poor quality of orgasms, and prolonged refractory period. So these are the problems which can arise in 40. And
Be happy is the best way to ignite the spark. So promote a healthy lifestyle. Compensate for your age-related changes. Manage pathological diseases immediately. Review all the medicines you're taking. So they might have to change and modify the environment. I say जगह बदल के तो देखो, धुन बदल के तो देखो, partner नहीं बदलना है. और मल्टीपल पार्टनर्स नहीं ट्राई करने कि आज बिजनेस ट्रिप पे गए तो 1-2-5 मिनट के लिए हो जाए. So you're looking for this spicing up your life, try eating good foods. So eat these fruits, figs, bananas, avocados. अब ये नहीं कि 10-10 खाने लग जाओ एक ही दिन. So put them in your diet. And these foods and vitamins provide correct vitamins which will boost the circulation. Eat chocolates. अब ये भी नहीं कि बहुत सारे खाओ, diabetes ही हो जाए. So but dark chocolate, black chocolate is a serotonin releasing factor. And use the right chocolates. Garnish your food. Indians and especially Chinese and Koreans use a lot of basil, garlic, all that. And while some no onion, no garlic people don't use that, but that is good for your erectile dysfunction and for libido in women also. The Africans use a lot of yohimbine in alkaloid food. So this is a bark which is a source for Viagra. Use the barks directly. Focus on how you feel. So regular movement practice, regular pressure, but it's not necessary to have penetrative sex every time and every day you come into the bed. It's a complete pleasurable experience being together. Stick to 1 glass of wine. Yes, 1 glass of wine is allowed, and because it eases your anxiety and maybe your interest in becoming intimate increases. But if you read Shakespeare, Macbeth provokes the desire but takes away the performance. So too much alcohol will inhibit your ability to have orgasms. Learn more of relationship of alcohol and sex. So alcohol लीजिए, एक glass red wine is good for your heart. Stress relieving is the most important. So daily meditation, relieve stress, Tai Chi or yoga is very, very important. Now it is available online. It is available on TV. You can see the film stars. You can see Ramdev Baba doing yoga every day in the morning. Do it with him and improve your... avoid hectic lifestyles and take naps in between. So a power nap in the afternoon, 20 minutes, or get up early in the morning after breakfast. Just relax. With high healthy diet, proteins, carbohydrate, correct mixture, and a nap in between and resting in between. Keep your relationship in check. Keep emotionally closeness. Communicate everything, even if it is silly things. Do communicate and keep communicating. So that is very, very important, to keep on talking to each other. And see, sometimes you go in parties and you're talking to 100 different people and not to your partner, and your partner is sitting in a corner neglected. अरे ये तो मेरी बीवी मेरे से यहाँ बात ही नहीं कर रही, या मेरा हस्बैंड को तो सुंदर सुंदर गर्ल मिल जाए तो उसकी गर्ल खड़ा हुआ है. हाँ, तो कोई बात नहीं है उसमें, वो उसकी सेक्स लाइफ को स्पार्क करेगा, बट आप अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं कर सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And finally, of course, you should come to a doctor like me or Beenal or the others if you want a real sex therapy and relationship counseling. That is very, very important. There are various drugs: Viagra, sildenafil, Cialis, Levatra, Tadalafil. All these can be used where required, not randomly. The blue pill is not the answer for all the problem. There are a lot of junk medicines available: Spanish fly, love potions, Sande ka tel, Japanese tel, 100% guarantee or erection for 2 hours, gaadi chalti jayegi hardam. All those are rubbish and humbug. No intercourse lasts for more than 7 minutes. Read the book 7 minutes. There's a good, lovely novel. And even 7 minutes is quite a lot of time for a lot of us. Us means I'm including myself in it. So that's and I'm not ashamed to say that. That's the time that which we have. It's not like dogs who get hooked up for hours and hours during a sexual intercourse. Prepare a Cupid menu for yourself. So aphrodisiacs, gas-inducing aphrodisiacs, food that induce gas. So balance your menu and your daily lifestyle. And finally, ladies and gentlemen, I thank you very much for inviting me. And my role to married couples is
To all the men, treat your wife as a girlfriend forever. Give her a flower every day, send her a card. उसके कपड़ों में कुछ छिपा दो, एक छोटा सा चॉकलेट. जब भी कभी 10 दिन बाद भी ढूंढेगी, she'll always feel very happy. She might not say it, but she'll feel it. And all for the women, थोड़ा सा हम लोग को किंग्स की तरह ट्रीट करो, and see life will be different. तो धुन बदल कर देखो, everything will be all right. Thank you very much, Beenal, for giving me this opportunity. Wonderful, sir. Yeah, may I have comments from Dr. Naini, madam, please? Yes, thank you, Dr. Malhotra, for such a wonderful talk. And you busted so many myths and cleared so many doubts. And your tips were really very practical and useful. Thank you once again. You made such a complex topic so simple and so beautifully you presented. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you, the chairpersons. And sir, I mean, from the day one, when this topic came, you are the one who was in my mind, because you really exemplify. And really, you and Madam Jaideep, madam, you are such a wonderful couple. And really, you set the example for all of us. Sir, with your kind permission, can I play that song again with you and ma'am with the music? I'll request Mr. Paresh from IMS to play it. Sure, I think Foxy it's on the Foxy website, so I don't mind. Thousands of people must have seen it. Yeah. So, Paresh bhai, may I request you to play that song again for all the viewers? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर. Thank you. And yes, you are very right that it's not only about penetrative sex or physical intimacy. It is about the emotional connect. I mean, this two souls are there on earth as life partners. So they should be actually soulmates. And there is much more to sexuality than just mere sex. So thank you so much. And I hope everybody was really, awestruck with how beautifully Sir demystified all the myths about it. So thank you, Narendra sir. Thank you so much. Thank you, Doctor. Communication should be maintained between the couples and no argument on the bed. These are some of the practical tips. And diet, exercise, yoga, of course, which many couples are lacking, especially IT industry. So long hours of work. So it was really a very practical topic, and practical comments were brought from Narendra Malhotra sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Ruchika ji. Thank you, Dr. Naini. Manisha madam, over to you, MOC. Yeah. Thank you, Beenal. You have already thanked the chairpersons and thanked Sir enough. Of course, it was very, very lucid, very interesting as always. He's a very good orator, I had already mentioned. So now I request Dr. Beenal to announce the results of the IMS Plantation Drive Contest, the Green Campaign, Let's Make Our Planet Green. Thank you, Dr. Varsha ji. Paresh bhai, can you please share the results? So I'm really happy that every month, we are having these contests on various topics. And I'm really impressed by the wonderful active participation from all the IMS societies. And this time the contest was on the plantation drive. Yeah, Paresh bhai, we can have the results PPT, please. Yes, ma'am. Yes. Yeah, so we had two kind of categories in the contest. One was a society participation, wherein I had requested the societies to participate. All the members of the society were supposed to send their plantation pictures, and the president was requested to prepare a brief summary and the collage of all the plantation pictures and share with me. So with that, we are declaring those prizes. And another contest in the same flyer was slogan contest, wherein we had requested them to write a slogan on Prakriti or environment. Yeah, can we have the full screen, please?
And if the society presidents or anybody who is in the winner, if they are here, then please unmute and at least accept that award. So I'm happy to share the first position in the society category goes to Bhopal Menopause Society. Bhopal Plantation Drive was there, which was conducted, and they were working in this field for more than 7 years. So it's not only a day's work, but planting trees, nurturing them, taking care of them. It is an ongoing process. And this is how we, give back to our earth, our nature, and reduce our carbon footprints. Next slide, please. This is again the picture from the Bhopal Menopause Society only. You can see the collage of all the plantations being done, and you can see how actively all the members have taken part, and they have planted more than 2,000 native trees. It is also important to understand the type of trees and which species will be able to grow in that particular environment. So Dr. Shraddha Agrawal, Dr. Rajni, all had taken active participation. Dr. Abha Jain, Dr. Mamta Gupta, and everybody from Bhopal Menopause Society had contributed. So congratulations, Bhopal. Next slide, please. Second position in the plantation category goes to Vijayawada Menopause Society. In the plantation drive, they had planted more than 500 plants, and from all the members, the participation was there. So congratulations, Vijayawada. Next slide, please. Third position is by Vadodara Menopause Society. Yes, so congratulations, Vadodara. And Dr. Shweta was one of the very active participants, and Dr. Vasha Prapanna. And they had planted, Dr. Shweta and all, more than 5,000 trees in a farm. So that is really amazing. So thank you so much for doing this, very noble initiative and helping our future generations with the green planet. So congratulations, Menopause Society, Vadodara. Next slide, please. Yeah, next. Yes. Yeah. Paresh bhai, we already only wanted the results slide. Can we have the, I wanted the first, second, third ranks. This is actually participation of all. Can we have only the results PPT? So I'm really happy, and contest or no contest, all of us believe that, we really owe to our planet. And although we are, Chandrayaan has landed on the moon, but still, to have life on moon is probably many, many more years. Before that, at least we need to rejuvenate our own planet and, get it back in shape. So whatever we have taken, if we can give back in form of greenery, that will be really a good job we'll be doing for our future generations. Yeah. Please, next slide, please, Paresh bhai. Yes. Now, this is the result of the slogan competition. The first position goes to Dr. Amanpreet Sharma. She is from Amritsar. Second position, Dr. Geeta Lakshmi, Chennai, and shared by Dr. Ratna Bhatia from Jabalpur. And third position is by Alka Agrawal, Jabalpur. I hope all of you would also be eager to see the slogans. Next slide. Yes, the first position this slogan is getting. To begin with is the first step in moving ahead. Let's plant hopes and save our Mother Earth. So what a wonderful message they are giving, and the first prize goes to them. Next slide. Second position, the slogan from Dr. Geeta Lakshmi is nurture nature. Nature alive, you survive. Don't torture nature, it ruptures future. So wonderful rhyming in your slogan. Congratulations. Next slide. Second position shared by Ratna Bhatia from Jabalpur. Nurture nature, sustain life, preserve Earth's beauty, cherish every leaf, embrace the wild, protect with pride. Guardians of green, our earthly creed. So that is from Mrs. Ratna Bhatia, Club 35, Jabalpur. Congratulations. And third position is won by Dr. Alka Agrawal. She participates in every contest of ours. Greener the earth, lesser the global warming, will keep the nature blooming. So congratulations to you as well.
Next slide. And now we have results from the Hindi slogan contest. First position goes to Dr. Varsha Prapanna, who is also the MOC for today's webinar. Congratulations, Varsha ji. Second position by Dr. Nikita Kapoor, Agra. And third position is by Dr. Sushma Verma, Raipur. Yeah, can we have the next slides? So this is the poetry from Dr. Varsha Prapanna. प्रकृति धरती की है शान, प्रकृति है जीवन की पहचान, प्रकृति है ईश्वर का उपहार, प्रकृति हम पर तेरा है उपकार. So that is wonderful, Dr. Varsha ji. Congratulations. Next slide. Second position is won by Dr. Nikita Bagri Kapoor. She has sent slogans in both languages, but especially the one in Hindi has won the prize. बंजर धरती दे रही तुम्हें पुकार, हर धर घरियाली हो, हर धरा का श्रृंगार, आने वाली पीढ़ी की हम करें रक्षा, हमारी जिम्मेदारी पर्यावरण की सुरक्षा. So a wonderful message by Dr. Nikita from Agra. Thank you, Dr. Nikita. Next slide. Yeah, the third position in Hindi is won by Dr. Sushma Verma, who is the president from Raipur. पर्यावरण की सुरक्षा में पौधों का फर्ज निभाते हैं, चलो हम भी एक पेड़ लगाते हैं. थोड़ा सा फर्ज निभाते हैं, चलो हम भी एक पेड़ निभाते हैं. आओ मिलकर धरती को सजाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं. So congratulations, Dr. Sushma ji, and wonderful message which you have given. Next slide. Thank you, Dr. Vinal. Yeah. And these are the appreciation prizes for the regional category. We had 5 doctors from Madurai and Chennai participating in Tamil language. So it's really good for the spreading awareness in the regional language. And 3 members from the Rajkot Society, they had sent wonderful slogans in Gujarati. So I really appreciate your effort. And yeah, Parishbhai, can I go to the first slide? So total number of participants and everything is written there. First slide of this PPT. So I really appreciate the enthusiasm with which you people are all taking part. And total number of entries in the plantation drive, we had entries from 12 societies of IMS. I wish that the number would be still more. So all presidents, please wake up and please take part in this. And, try to initiate this drive in your members as well. In the slogan contest, we had 38 participants. And I'm really thankful to the esteemed judges, Dr. Niranjan Shendunikar sir, who is a very senior pediatrician in Baroda, and Dr. Preeti Niranjan, who is the founder, president of Menopause Society Vadodara. So they had helped me in judging the contest. So thank you so much. Yeah, Parishbhai, I think you can stop sharing now. So thank you all for a patient listening, and I thank you to all the societies who are collaborating. So over to Dr. Varsha ji to please invite Dr. Pallavi. Yeah. So congratulations to all the winners. 3 cheers, Vadodara Menopause Society. And congratulations to all the participants. It's very important to participate actually, to be creative is very nice. And we now come to the end of this webinar. For the ceremonial vote of thanks, I will invite Dr. Pallavi Satarkar, our own president of Vadodara Menopause Society. She is an IVF consultant and laparoscopic surgeon. She has been the past president of Vadodara Gynec Society as well. And most of all, she was organizing secretary. She conducted the SOGOG 2019 very well. Over to you, Pallavi. Dr. Pallavi. Yeah, thank you and congratulations, Varshaben, for bagging so many prizes today. Today, I will not be putting my camera because I'm driving. I'm in a car, but I was with you guys throughout the program, listening to the wonderful speakers from Nagpur and our beloved Dr. Narendra Malhotra sir. And first of all, I would like to congratulate Dr. Vinal madam for selecting such a beautiful topic, which is really a topic of public awareness. I mean, it is very less talked about topic without having any shame, because we have seen like there was always bias to talk about
anything related to sexuality, whether it be a male or female. So it was really very nice for Dr. Binal to put up this topic, and the justice done by both the speakers was excellent. जब जब ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हो तो आप वो जो समझे ऐसी भाषा में बात करना चाहोगे, and that was very rightly done by both the speakers. They must have touched the intellect and the thinking sides of the mass people who technically fail to understand. जो बहुत सरल भाषा में उनकी तरह सोच होती है, उस तरह से उन्होंने सब मुद्दों को रखा। और सारे चेयरपर्सन्स और सारे जो लोग ये प्रोग्राम जिन्होंने कंडक्ट किया, अटेंड किया, चेयर किया, इनको कंडक्ट किया, बहुत अच्छी तरह से किया। और इस फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी बीनल ने मुझे दी एज प्रेसिडेंट ऑफ मेनोपॉज सोसाइटी वडोदरा चैप्टर. I would like to thank the entire floor for doing a wonderful program. Binal, over to you. Thank you so much, Dr. Pallavi. Thank you for joining. And I would like to even thank Dr. Varsha, who's the MOC and, conducted the entire event so flawlessly. And especially thanks to Sushma Bakshi madam, Dr. Anita Shah ma'am, Dr. Maya Modi ma'am. I can see that all of you have joined, and, such support from all of you really keeps me motivated and boosted. Yeah, Dr. Sushma ji, I can see you, and I can see the smile on your face after the prize declaration. Dr. Binal, it was a wonderful program. I really enjoyed. It is very, actually, very informative, and it is for all the public which is very which feel hesitant to discuss such topics even with the doctors. Right, you're very right, ma'am. And I remember that few years back, it was even a taboo among the doctors to discuss all this. I mean, I was really surprised. बीनल मैडम ने जो राइटली बोला कि हेजिटेंट है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम लोग उसके आगे गए हैं. हम तो पहले ये चाहते हैं कि कपल्स पहले आप एक दूसरे में इसको पहले डिस्कस करें. उतना भी आइस अगर ब्रेक हो गया तो आई थिंक द program is a big success. Right, true. Bakshi ma'am, can we have some words from you? Yeah, hearty congratulations. Actually, if you see the mythology of ours, and if we see the ancient culture, this was a day in and out, a very welcome discussion and education in our culture. Incidentally, it had gone back and had become a taboo. And I'm extremely happy that the efforts are on in the right direction, creating public awareness and giving the right messages. I mean, this is a long way to go. And for that, for the entire team and to you and all the speakers, I must congratulate, and I really enjoyed it. Yeah. Thank you so much, ma'am. And सही है, अब हम ये जो पहले बोलते थे ना कि गंदी बात, उसमें से हम धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलेंगे. एंड इस चीज को इट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, एंड देयर इज नथिंग, नो शेम और नो टैबू अबाउट स्पीकिंग अबाउट सेक्सुअल हेल्थ. एंड जैसे WHO ने बोला है कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत जरूरी है फॉर द होलिस्टिक हेल्थ. एंड प्रॉब्ली दैट इज द मोटो और थीम ऑफ Indian Menopause Society, that we want our females and actually the entire population to be fit and happy and sexy as well, right? Anita ma'am, are you there or has she left? Anita madam has left Binal just now. Okay, 5 minutes ago. Yeah. No problem. So I think we can conclude now. So thank you everybody, and thank you Paresh bhai for being the support all the time. So thank you Paresh.